One is regular shapes. Regular shapes में in our syllabus we've got the following shapes with us: a rectangle, a circle, a semicircle, a triangle, and a trapezium. These are the 5 regular shapes जो हमारे syllabus में हैं. These are in our syllabus. Then the other shape which is there in our syllabus is curvilinear shape. That means curves. And when we talk of curves, straight away it leads us to the good old Simpson Baba is back. So Simpson rules. So whatever we have done in phase 1, that will now come in handy, because all that is will be advanced version of it, of course, will be done here. So you can revise your Simpson अगर आपने phase 1 बहुत देर पहले किया था. So this is what is the शुरुआत. So starting off with regular shapes first. And in regular shape, we are talking about shape number 1. And that is a rectangle. So let us say that this is a bulkhead, which is rectangular. One bulkhead of a particular tank. This is the bulkhead. This is the tank. ये टैंक है और इस बल्कहेड की बात हो रही है. And let us say that this tank is filled up with water, and this is the sounding pipe of the tank. ये sounding pipe है और पानी sounding pipe में भी है. This is the water line or water surface, as it is called. Water surface कहते हैं इसको. So it is filled up to this sounding. This whole thing is the sounding.
This is the sounding. The length, this is the length of the bulkhead. So इसको L कह रहे हैं. This is the length of the bulkhead. This is the breadth of the bulkhead. The height is the breadth of the bulkhead. This is the length of the. So basically, we are talking about this bulkhead. This is the length of the rectangle. This is the height is the breadth of the rectangle. So the geometric center of the underwater portion will lie over here. This will be the geometric center, the GC. Of the underwater portion. This is the geometric center. The formula for thrust is pressure into area. Now I'm doing phase 1 revision. Thrust is pressure into area. Pressure is depth into density. So putting this in the first equation, thrust is depth into density into area. This is my first formula. Thrust is depth into density into area. Definition of depth. Definition of depth. Is the distance of the GC to the water surface. The distance of the GC to the water surface is known as depth. तो ये डिस्टेंस इसको हम कहते हैं D, small d, which is depth. So ये D है मेरा. Density, of course, will be given in the question. Definition of area. A is the underwater area. मतलब rectangle का area, that is L into B. That is known as underwater area. The area of the sounding pipe is not contributing to the underwater area because this is considered very small as compared to the area of the bulkhead. So इसको neglect किया जाता है. Sounding pipe does not contribute in the underwater area. Okay. The question is, इस formula से मुझे thrust मिल जाती है. Where is this thrust acting? That's the question. Where is this thrust acting? ये thrust कहाँ act करेगा?
vertically downward from the GC? एक्चुअली तो ये थ्रस्ट ऑल ओवर ऑन दिस बल्कहेड परपेंडिकुलर ऐसे एक्ट कर रहा है, और अगर मैंने अंदर लिक्विड डाला है तो अंदर से बाहर एक्ट कर रहा है. एग्रीड? सो इट्स एक्टिंग परपेंडिकुलर along the z plane of this board. Do you agree? Yes. If my tank is this side, on the back behind the board, then the thrust is acting outward. If my tank is over here, then the thrust is acting inward. Yes, sir. Okay. So actually में ये जो thrust है, supposing this thrust is 400 tons, then this 400 tons will act everywhere on this bulkhead. सब जगह 400 टन होगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये बल्कहेड जब क्रैक करेगा, when it will give way for the first time, वो पॉइंट कुछ ऐसा होगा, पॉइंट P. और ये पॉइंट P is known as center of pressure. So point P, center of pressure, lies below the GC. It lies between the GC and the keel. इन दोनों के बीच में होगा. It will lie vertically below the GC, where all the thrust of 400 tons is assumed to act. Actual reality, thrust is acting all over on the bulkhead. But the point P will be the point जो इसका bulkhead यहाँ पे crack करेगा, where the bulkhead will give way for the first time. That would be the center of pressure. Imaginary point where the entire thrust is assumed to act. अब इस point P की महत्वता क्या है? This distance of P to the water surface is known as Z. So what is Z? Z is the distance. Z is the distance from center of pressure to the water surface. Distance of the center of pressure to the water surface. This Z is given by a formula, moment of inertia about the water surface upon A into D. This is a standard formula. हर बारी ये यूज होगा. I about the water surface divided by AD. I divided by water surface divided by AD. And I about the water surface क्या है? I about the GC is equal to I about the GC. This is I about the GC. I'm calling it as IGG. IGG. This is the I about the GC. That is given by the formula side parallel to the axis, powered as 1, L. Side perpendicular to the axis, powered as cube,
LB cube by 12 is I about the GC. That is IgG. I want I about the water surface. I about the water surface is given by a theorem of parallel axis, where theorem of parallel axis says IgG plus AD square. This is known as theorem of parallel axis. That means moment of inertia about this axis plus AD square will give me I about the water surface. So plus AD square, D is the distance through which I am moving the axis. So LB cube by 12, A area, length into breadth into D square. ये मुझे IWS देगा, जो कि इस फॉर्मूले का न्यूमरेटर बनेगा. तो ये मेरा न्यूमरेटर हो गया. डिनोमिनेटर में ए एरिया मेरे को पता है ऑलरेडी, LB, D मेरे को पता है, सो मेरे को Z मिल जाएगा. दिस विल बी माय फॉर्मूला नंबर. ये मेरा फॉर्मूला नंबर 2 था, ये मेरा फॉर्मूला नंबर 3 हो गया, और आखिरी फोर्थ फॉर्मूला. क्वेश्चन मेरे से केपी पूछेगा, ये पूछेगा केपी. सो केपी विल बी इक्वल टू साउंडिंग माइनस जेड, होल थिंग साउंडिंग पूरी की पूरी माइनस जेड, जो कि मैंने फॉर्मूला नंबर 2 से निकाली, विल गिव मी केपी. तो ये मेरे 4 फॉर्मूले हो गए. हाँ जी, डाउट्स? Sir, this IgG is the moment of inertia for rectangle. This LB. IgG is the moment of inertia for the rectangle. Yes. About this axis, This axis. GG. Okay. This Okay. GG that is passing through the geometric center. So Okay. ये वो हो गया. जिन लोगों के साथ मैंने बिल्जिंग कराई हुई है, उस ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बिल्जिंग में यूज हुआ था. अप्रैल बैच आपके साथ बिल्जिंग हो चुकी है? नहीं, नहीं सर, अभी नहीं हुआ. अच्छा, अप्रैल बैच के साथ नहीं हुई. मार्च बैच? हमारे साथ हो गई. हाँ, मार्च बैच के साथ बिल्जिंग हो गई है. ओके, सो यू विल रिमेंबर दिस. सो अप्रैल एंड May बैचेस, this is something called as theorem of parallel axis. I'll be doing this again when I do biljing with you guys next month. So just अभी ये लिख लो खाली कि ये होता है फॉर्मूला, फिर मैं उस वक्त एक्सप्लेन करूंगा. तो ये थ्रस्ट कैलकुलेट किया, ये कहाँ पे यूज किया हमने इसमें? थ्रस्ट कहाँ पे यूज किया हमने? थ्रस्ट जो हमने कैलकुलेट किया, दिस थ्रस्ट सपोजिंग 400 टन आई, तो ये एक्ट कहाँ कर रही है? ये पी पे एक्ट कर रही है. अच्छा, तो मतलब क्वेश्चन में होगा कि फाइंड द थ्रस्ट एंड द पॉइंट वेयर इट्स एक्टिंग, ऐसा? नो, क्वेश्चन में होगा फाइंड द थ्रस्ट, फाइंड केपी. क्वेश्चन में ये होगा. ओके. अच्छा, तो वो फर्स्ट पार्ट करने के लिए हमको थ्रस्ट निकालना पड़ेगा, लेकिन वैसे थ्रस्ट का बाकी इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं.
थ्रस्ट का बाकी इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं, थ्रस्ट की एक वैल्यू निकलेगी, ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है और केपी पूछ रहा है मुझसे क्वेश्चन, तो केपी करने के लिए मुझे ये सारा करना पड़ेगा, जेड निकालना पड़ेगा। तो और थ्रस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट होगा एक पार्ट। ओके सर। Sir, one down. हाँ जी प्लीज पूछिए। Sir, as we discussed that thrust will be all over on the bulkhead, but imaginary will be taking at point P. Correct. So, sir, if we assuming it, so it's supposed to be at the point GC. नो If we are taking at the center. नहीं नहीं, ये टेक्निकली रॉन्ग हो गया। अब ये सेंटेंस गलत हो गया। थ्रस्ट इज calculated using the GC but assumed to act at P. Thrust is calculated using the GC. Okay? It is calculated using the GC. Okay, But even if we are assuming after calculating from GC. yeah. If we are It is always calculated using GC. Always. It is not assumed. It is always done that way. So अगर supposing मेरा ये supposing ये टैंक खाली होता, ओके, दैट मीन्स इसमें कोई पानी नहीं है, तो इसका जीसी कहां होगा? कील पे होगा, बिकॉज जीसी इज ऑलवेज ऑफ द अंडर वाटर एरिया, प्लीज रिमेंबर। सो इफ देर इज नो पानी, जीसी इज एट द कील। वेयर इज द सेंटर ऑफ प्रेशर? एट कील ओनली। इज नॉट देयर, देयर इज नो प्रेशर because there is no pani. Now I start filling up the pani. थोड़ा सा पानी मैंने डाला. Where is the GC? Half of that pani. Agreed? yes, sir. Supposing मैंने पानी इतना डाला, यहां इतना पानी डाला बस, तो GC उसका हाफ होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर उसके भी नीचे होगा। अब मैंने डालता गया पानी, डालता गया, डालता गया, डालता गया, यहां तक आया, ऊपर तक आया, जीसी अपने हाइट पे आ गया, पी उसके नीचे है। अब इसके बाद मैं पानी भरता गया, और अब साउंडिंग पाइप में पानी भर रहा हूं, जीसी कहां है? वहीं का वहीं, जीसी अपने मैक्सिमम हाइट पे आ गया। व्हाट अबाउट सेंटर ऑफ प्रेशर? ये बढ़ता रहेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर बढ़ता रहेगा। मैं जितना पानी डालता जाऊंगा साउंडिंग पाइप में, पी बढ़ता रहेगा, बट इट विल ऑलवेज रिमेन बिलो द जीसी। अब पी की सिग्निफिकेंस क्या है? पी की सिग्निफिकेंस ये है कि जब ये बल्कहेड क्रैक करेगा, पी इसका वीक स्पॉट है, बल्कहेड यहां से पहले क्रैक करेगा। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फेलो। सर ये P cannot be at GC point. नहीं, कैनॉट बी। पी विल ऑलवेज बी बिलो जीसी। Sir, if there is a irregular shape, like in this case rectangular, so this seems little ideal situation where we can assume that P could be at GC. If it's irregular, I can understand it cannot be at the geometric center of that area. So, I mean, why we cannot assume at GC? I mean, what all things we are considering? Or just we have assumed. So I'll make note of this. सी बेसिकली अब ये फिजिक्स में जा रहे हैं हम, तो नाउ ये 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स आ गई, 11th 12th की, कि जो प्रेशर है ना, वो इट इज ड्यू टू द हेड, वी नो दैट, राइट? सो द मोर हेड आई कीप क्रिएटिंग,
the pressure will keep acting and will keep increasing the more head I create, right? So therefore, at some point in time, when the pressure exceeds, the bulkhead will give way, it will crack. तो कहाँ से क्रैक करेगा? वो सेंटर ऑफ बल्कहेड से क्रैक करेगा? नहीं, वो उसके ऊपर जितना बिल्डअप हो जाता है, सो इसलिए वो जो जहां से क्रैक करता है, बिकॉज वो पॉइंट दिया जाता है कि जहां पे द एंटायर थ्रस्ट इज एज्यूम टू एक्ट। तो ये थ्रस्ट जो है रियलिटी में तो सारे बल्कहेड पे एक्ट कर रही है, बट एक पॉइंट है जहां पे वो एज्यूम करते हैं, जहां पे वो क्रैक करती है, ये वो पॉइंट है। ओके, अभी मैंने अच्छी शेप ली है। अब एज वी कीप गोइंग टेकिंग मोर शेप्स, देन इट विल बिकम मोर क्लियरर। जब मैं वो ट्रेपीजियम पे आऊंगा तो देयर विल बी अ वेरी फनी शेप। दैट्स द रीजन व्हाई उसको लास्ट में रखा है मैंने। सर थ्रस्ट के फॉर्मूले और जेड के फॉर्मूले में जो डी है वो वही है ना सर, फ्रॉम द ग्रेविटी टू द वाटर सरफेस? हाँ, ये जो डी है ये कॉमन डी चल रहा है, ये भी डी वही है, ये भी डी वही है, थ्रस्ट वाला भी डी वही है, ये सब एक ही डी चल रहा है, ये वाला डी भी वही है, मैं सब डी एक ही रख रहा हूं। ओके सर, ठीक है, और कोई डाउट? ओके, सो सपोजिंग, अच्छा ये तो ये हो गया। अब मैं शेप नंबर 2 लेता हूं। शेप नंबर 2, and we are now talking about a triangle with an apex downward. Triangle with an apex downward. So अब बेसिकली मेरे जो फॉर्मूले बदलेंगे वो कौन से होंगे? ये फॉर्मूला बदलेगा नहीं, फॉर्मूला नंबर 1 सेम रहेगा, फॉर्मूला नंबर 2 भी बदलेगा नहीं। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2 भी नहीं बदलेगा। ये मेरा फॉर्मूला 3 बदलेगा, ये चेंज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 4 नहीं बदलेगा। ओके, सो 1 नॉट चेंजिंग, 2 not changing, 4 not changing, 3 changing, because area will change of a triangle and therefore moment of inertia will change. So 1, 2 and 4 अब मेरे सारे केसेस में जब भी जाऊंगा मैं, चाहे वो रेगुलर शेप हो चाहे वो कर्वी लीनियर हो, ये मेरे फॉर्मूला बदलने वाले नहीं है, ये सेम रहेंगे। 3 बदलता रहेगा, इसको मैं बदलता जाऊंगा बस बार बार। ठीक है, इज दैट ओके? सो लेट मी टेक। और सर इसमें सर ये जो डी जो है डिस्टेंस ऑफ जीसी टू वाटर सरफेस वो भी बदलता जाएगा ना? नहीं, क्योंकि नहीं, फॉर्मूला तो यही जीसी रहेगा, अलग हो। फॉर्मूला हाँ, ही बट वही रहेगा। जीसी से ओके, GC will change, the distance will change, but the formula is not यस going to सर, change. डिस्टेंस, यस सर, यस सर। वीडियो स्टक हो गया।
सर की आवाज आ रही है क्या किसी को? वीडियो स्टार्ट कर। Sir, cannot hear you. Yes, sir. Now video is visible. Now visible. Okay, am I visible now? Sir, can you repeat from the starting because I missed it Yeah. out because of Yeah. net issue. Yeah. So I'm now taking a triangle whose breadth is capital B and whose depth is capital D. So I'm taking a triangle apex downward. This is the keel. This is the bulkhead of a tank, and the tank is filled up to a sounding. WS. So this becomes the sounding. ये पूरी की पूरी sounding हो गई. So ये हमारा टैंक है. अब the geometric center of the triangle. This is the GC of the triangle. This will be 2 by 3 from the apex, 1 by 3 from the base. Is that okay with everybody? Yes, sir. Is that okay with everybody? The GC of the triangle will be 1 by 3 from the base, 2 by 3 from the apex. ये GC है. So ये मेरी एक्सेस हो गई through the GC.
calling it as GG. So by definition, distance of the GC to the water surface is known as small d, the depth. By definition, center of pressure will be a point P below the GC. So therefore, distance of center of pressure to the water surface is known as Z, and therefore this distance by definition is known as Kp, keel to center of pressure. So is the diagram okay with everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डायग्राम Yes, sir. डायग्राम डायग्राम सबको समझ आ गया? मैं अपनी वही डेफिनेशंस को रिपीट कर रहा था पूरा का पूरा, जितनी भी डेफिनेशन वो सबको रिपीट कर रहा था. सो मेरा फॉर्मूला नंबर 1 सेम रहेगा, मेरा फॉर्मूला नंबर 2 सेम रहेगा. अब मैं आ रहा हूं नीचे वाले पे. By area of a triangle will be half into base into height. So this is my area of the triangle, half BD. Please remember underwater area. Please remember underwater area. अगर किसी प्रॉब्लम में ये वाटर सरफेस इधर तक आ गई, नीचे तक, that means the sounding is less than capital D. Then please remember your B, the breadth, is the breadth at the water plane. B is your breadth at the water plane. So you'll have to find out the breadth at the water plane using similar triangles. Remember, A is your underwater area. Please remember that. So I of a triangle about GG is given by a formula BD cube by 36. Standard formula है ये. I of a rectangle of a triangle about the geometric center is given by a formula BD cube by 36. I want I about the water surface. Will be equal to BD cube by 36 plus AD square. Theorem of parallaxes लगा रहा हूं. So BD cube by 36 plus A, area will be half BD. D is your depth, distance of the GC to the water surface. आप निकालोगे एंड उससे आपको IWS मिलेगा. ये आपका बन गया फॉर्मूला नंबर 3.
एंड फॉर्मूला बाकी 1, 2 एंड 4 सेम रहेगा. हाँ जी, एनी डाउट्स? सर अगर साउंडिंग कम होगी तो डी हिसाब से कम हो जाएगा. हाँ जी, अगर साउंडिंग कम होगी, मतलब अगर कम होगा तो जो कैपिटल डी है डी क्यूब वाला वो उस हिसाब से कम हो जाएगा. नहीं, आई कुडंट गेट यू. कैन यू प्लीज रिपीट? तो जैसे ये बी डी क्यूब बाय 36 है इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें कैपिटल डी इज द साउंडिंग, करेक्ट? कैपिटल डी इज द डेप्थ, द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज नॉट द साउंडिंग. आई मीन कि मतलब ट्राइंगल में जितना वाटर लेवल भरा हुआ है उतना. नहीं, कैपिटल डी इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल. अगर साउंडिंग ऊपर तक है तो कैपिटल डी इज ओनली द हाइट ऑफ द ट्राइंगल. अगर लेट्स से कि अगर ट्राइंगल हाफ फुल्ड है, अगर आधा ही भरा हुआ है, ट्राइंगल अगर पानी हाफ फुल भरा हुआ है तो कैपिटल डी इज द साउंडिंग. ओके सर. तो मतलब ट्राइंगल के अंदर जितना वाटर लेवल है उतना डी उसके बराबर हो जाएगा. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. एब्सोल्युटली राइट. ये जो स्मॉल डी है इनर्शिया वाटर सरफेस में बी डी क्यूब बाय 36 प्लस ए डी स्क्वायर, तो सर वो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में आपसे कहा था कि सर जो स्मॉल डी है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन कितना मूव हुआ वो. जीसी टू द वाटर सरफेस, ये स्मॉल डी है. जीसी टू दी वाटर सरफेस, ठीक ठीक. जैसे सर वो बिल्डिंग में तो वो था कि कितना सेंटर लाइन से कितना मूव हुआ स्मॉल डी. बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग को अच्छा, ओके. डिस्टेंस थ्रू व्हिच द एक्सिस इज शिफ्टेड. Small Yes, d sir, is yes, the sir. distance through which the axis is shifted. So the axis is shifted through this distance. ठीक ठीक, ओके ओके. GC से लेके जा रहा हूं मैं, कहां जा रहा हूं? ऊपर तक जा रहा हूं. तो ऊपर कितने से, डिस्टेंस ठीक, के थ्रू मूव कर रहा हूं? ठीक ठीक, करेक्ट करेक्ट सर. हाँ जी. एनी अदर डाउट? सर एक वो बता देंगे, साउंडिंग आपने बताया था ना भी कम होगी तो क्या होगा पानी का लेवल इसमें. ओके. तो बेसिकली अभी तो पानी ऊपर है. अगर पानी ऊपर है तो द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज कैपिटल डी. यस सर. अब मैं पानी को नीचे लेके आता हूं एंड मैं सपोजिंग ट्राइंगल को हाफ करता हूं, तो कैपिटल डी क्या होगा? साउंडिंग के बराबर होगा ना. साउंडिंग के बराबर होगा. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. ओके ठीक. बेसिकली मैं इसको नीचे लेके आ गया, आधा भर दिया मैंने, तो मैं साउंडिंग को ही नीचे ला रहा हूं. तो कैपिटल डी क्या है? साउंडिंग है. दैट्स व्हाट. ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू. या ओके. एनी अदर डाउट? Okay. So let's stop here. Tomorrow we'll do the numericals from this chapter. कल तो ये formulas को जरा एक बारी रिवाइज कर लेना प्लीज सारे, because tomorrow we'll be applying these formulas directly to the numericals. ठीक है? Okay. See you then. Bye sir. Bye sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.